even if only by video conference, only a virtual meeting. We had very much hoped to meet you in person, but it wasn't possible for you to come here. We are going to be talking about the COVID-19 crisis, which is a pandemic of unprecedented nature, a worldwide crisis which has hit health, the economy, and all aspects of human life. And this pandemic requires a global response, an international response. And I'd like to thank India for the cooperation your country has shown with the EU. I'd like to pay tribute to your role nationally, your mobilization, but internationally, the role you've played multilaterally in combating this pandemic. India and the EU are partners in trade, in investment. We are fully convinced that building on what we already do in this partnership, we can, through this meeting, find a way to find means of intensifying our cooperation even further. This in all areas, including trade and the economy. India and the EU are great democracies. We share common values. We also believe that multilateral commitments needs to be boosted and supported to combat global challenges, whether it's stability, security, combating terrorism, and so on. And so, Prime Minister, I also want to I'm not only very happy to see you in this video conference, but also want to take this opportunity to express the wish to really see this partnership with India as a political one covering multiple facets of our relationships, but is also a stable, structured, essential partnership, a structural partnership. This is how we see it. We also wish to congratulate India for being elected to the UN Security Council for 2021-2022. We are also very happy to welcome you to the leadership of the G20 in 2020, which will actually be the 75th anniversary year of the independence of India. I hope that through this conference we can make even further progress and understand each other even better and strengthen our links even more bilaterally and multilaterally. And I hope that when it will become possible again, when the health situation changes, we will be able to meet personally again too. So this is what I wanted to say by means of introduction. And if I may, I would now like to ask President von der Leyen to take over, and then I would ask you to make your introductory comments too. Ursula, you're next, please. Thank you, Charles, and dear Prime Minister. It's a pleasure to see you again. And I very well remember my visit to India a few years ago. So it's wonderful to see you now. Unfortunately, on screen, I would have liked and preferred to visit you personally. But, well, these are difficult times, and therefore unusual measures have to be taken. I'm very much looking forward to our exchange. Me too, I would like to offer my sincere congratulations on twice on two topics. First of all, indeed, on the positive vote in the United Nations, and secondly, on securing the G20 presidency in 2022. So there is a lot of work ahead of us together. I will not, right for my introductory remarks, go too much in depth because we have a packed agenda. It's a pleasure to see you again. एक्सेलेंसी नमस्कार। कोविड-19 के कारण हमें मार्च में इंडिया ईयू समिट स्थगित करनी पड़ी थी। अच्छी बात है कि आज हम वर्चुअल माध्यम से मिल पा रहे हैं। सबसे पहले मैं यूरोपीय कोरोना वायरस के कारण हुई क्षति के लिए संवेदना प्रकट करता हूं। आपके शुरुआती रिमार्क्स के लिए मैं आप दोनों महाशयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी तरह मैं भी भारत और ईयू के संबंधों को
और विस्तृत और गहरा बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसके लिए हमें एक दीर्घकालीन स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव अपनाना चाहिए। इसके साथ साथ एक एक्शन ओरिएंटेड एजेंडा बनाना चाहिए जिसे निर्धारित समय में कार्यान्वित किया जा सके। भारत और ईयू नेचुरल पार्टनर है। हमारी पार्टनरशिप विश्व में शांति और स्थिरता के लिए भी उपयोगी है। यह वास्तविकता आज की वैश्विक स्थिति में और भी स्पष्ट हो गई है। हम दोनों ही डेमोक्रेसी, प्लुरलिज्म, इंक्लूसिविटी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीलेटरलिज्म, फ्रीडम, ट्रांसपेरेंसी जैसी यूनिवर्सल वैल्यूज शेयर करते हैं। कोविड-19 के बाद आर्थिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर नई समस्याएं उत्पन्न हो गई। इसके लिए डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। आज हमारे नागरिकों की सेहत और समृद्धि दोनों ही चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर पर विभिन्न प्रकार के दबाव है। ऐसे में भारत ईयू पार्टनरशिप आर्थिक पुनर्निर्माण में और एक मानव केंद्रित और मानवता केंद्रित ग्लोबलाइजेशन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तत्कालीन चुनौतियों के अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे लॉन्ग टर्म चैलेंजेस भी हम दोनों के लिए ही प्राथमिकता है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ाने के हमारे प्रयत्नों में हम यूरोप के इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी का आमंत्रण करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वर्चुअल समिट के माध्यम से हमारे संबंधों को गति मिलेगी। एक्सेलेंसीज, मैं आपसे बात करने के इस अवसर के लिए पुनः प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। अब मैं हमारे अगले एजेंडा आइटम कोविड-19 के खिलाफ हमारे रिस्पांस पर अपने